हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल आल्स की टीवी। तो आज मैं आपके लिए नेक्स्ट क्यू कार्ड लेकर आया हूँ। जैन से अप्रैल 2023 की लिस्ट में है। एंड द क्यू कार्ड इज डिस्क्राइब अ हिस्टोरिकल पीरियड यू वुड लाइक टू नो मोर अबाउट। व्हाट पीरियड डू यू वांट टू नो अबाउट एंड व्हाई डू यू वांट टू नो अबाउट एंड हाउ डू यू थिंक यू कैन नो अबाउट। कि आपको कब कैसे उस चीज़ के बारे में पता लगेगा। बेसिकली क्यू कार्ड हमारा ये है, कोई हिस्टोरिकल यानी कि ऐतिहासिक पीरियड के बारे में बताना है जिसके बारे में आप जानना चाहते हो। और ठीक है, आप उसको क्या जानोगे, उसके बारे में कैसे जानोगे और क्यों जानोगे, ये हमारे 3 क्यूज हैं। ठीक है, आइडिया आप कोई भी ले सकते हो, किसी की हिस्ट्री भी उठा लो, किसी पर्सन की हिस्ट्री भी उठा सकते हो इसमें। ठीक है, वैसे को हमारे जो स्कूल में हमें पढ़ाई जाती है बहुत सारी हिस्ट्री पढ़ाई जाती है, चाहे वो आप यूरोप की हिस्ट्री ले लो चाहे जर्मनी की। ठीक है, बट हमारा जो कीवर्ड की लेंथ कवर करनी है हमने, तो वो हम पंजाब की हिस्ट्री से ही उठाएंगे, 1947 की हिस्ट्री। ओके, now let's start the cue card without wasting any time. Since childhood, we are listening to stories of unpatronized Punjab from our grandparents. Lahore is one of the cities I would like to visit one for sure. It is a significant city in present Pakistan. The city has several capitalism features that appeal to both residents and visitors. It will seem as though you are traveling back in time when you were in the Lahore, and the city has a long history because it was home for numerous ancient emperors who dominated the area. तो नेक्स्ट जो मैंने थोड़ा सा उसकी प्लेसेस के बारे में बताया है जो कि वहाँ पे हैं। ठीक है, अगर आप प्रोनाउंसिएशन ठीक करना चाहोगे तभी बोलना, नहीं तो रहने देना। ठीक है, the historic architectural marvelous and overall majesty of Lahore will astound visitors. The iconic Badshahi Mosque and the Lahore Fort, which is included on the World Heritage List, and the Fakir Khan Museum are the must-see historical sites. ठीक है, an education stroll through Lahore Old Wall City is recommended. Lahore is the fashion capital of present Pakistan and the city offers a fantastic shopping scene. There are shops there are shops there selling just about anything you can imagine for any kind of traveler. There are a wide range of shopping locations to discover, including enormous modern malls with luxury shops, historical schools offering genius local wares, and the vibrant local marketplace where the shoppers may enjoy haggling for the deal. Lahore, known for its wonderful cuisines, will be the food paradise, and the Lahore is a home to the profusion of roadside stands, and the fine dining establishments that are constantly packed with the locals and tourists. There is such a wide range of beautiful cuisines several across the city. You will never go hungry here, as soon are open round the clock. Around the city are also numerous traditional bakeries and sweet business. Lahore is also known as the Pakistan Culture Center and is populated with incredible, vocacious, ambitions, and welcome inhabitants who go above and beyond to make visitors feel at home. The people of Lahore are devoted to numerous traditions which are honored at gathering and festival that take around. In addition to these, Lahore culture is also portrayed through a literature, exotic cuisines, and art. It is thoroughly educational location where witches may learn a lot and have a lot of fun there. तो ये मेरा आइडिया था। इसके अलावा अगर पास और कोई आइडिया तो वो भी आप एक्सप्लेन कर सकते थे। फॉर मोर अपडेट विद द आयर्स एंड सेंटली आस्क क्वेश्चन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे ट्यून। थैंक यू।